Compute. Very good morning to all of you, beta. We are going to start today with mole concept and stoichiometry. Now, this chapter, you have to write and do it, because there are a lot of numericals, okay? Initial part you have already done in your ninth grade, okay? So, I want all of you to copy this part first. If you see here, what is the heading here? We are going to copy this. This is the name of the chapter. You are going to copy this. The name of the chapter. Name of the chapter is, all of you will just copy this. We have just started. Sorry, what is the name of the chapter? This you will copy. Mole concept and stoichiometry. Mole concept and stoichiometry. Write this, mole concept and stoichiometry. Just give the heading of the chapter. Okay. This entire chapter you are going to write. Mole concept and stoichiometry. First, you give the heading. All of you have given the heading. Now, beta, first of all, you all know, beta, what is atom? Mole concept and stoichiometry. Have you given the heading? Start writing, Fatafat. Okay. Then you will give the heading. Then first, after giving this heading and the name of the chapter, you are going to write atom. You all know, beta, atom. Atom is what? Hydrogen, oxygen, smallest indivisible particle. Then if I find mass of hydrogen, beta, in exam they will give you hydrogen mass is 1, oxygen mass is 16. This they will always give you in exam. So when I take mass of an atom, it is known as what? Atomic mass, or we are going to use this word, relative atomic mass, RAM. Okay, what is RAM? It is 1/12 the mass of carbon 12. It is 1/12 the mass of carbon 12. 1/12 the mass of carbon 12. What do you mean by this 1/12 the mass of? अरे बेटा हम लोग को कभी भी 1 लाना है. तो 1/12 into 12 is how much? 1. So if I say oxygen mass is 16, so it is how many times heavier? 16 times heavier than 1/12 the mass of carbon 12. It is 16 times heavier than 1/12 the mass of carbon 12. Okay, so I'll copy these two things. And once you are done, you will let me know. Hello. Tomorrow I'm going to take online revision in the evening. So can you do it before 9 o'clock? Yeah, before 9 only, yeah, obviously. But beta, there are 3 chapters, so I may have to extend it. Periodic table, chemical bonding, and this thing. Okay, I hope all of you have copied till here. Hello. Hello. Copied? Yes, sir. Then let us go to the next part. Okay, RAM, they will give you all these values, beta. RAM, hydrogen and all this. No need to write this. This they will give in exam. Then we are going to, if I write O2, H2, N2, so it is a union of atom molecule. What is molecule, beta? Molecule is what? What is molecule? Union of atoms, right, na, beta? Yeah, union of atoms. So if I write O2, H2, N2, Cl2, whenever I say oxygen, it is always in nature, it exists in form of O2. So union of atoms. So if I take a mass of this molecule, we call it as what? RMM. Relative molecular mass or molecular weight. RMM. Copy this now. Remember, beta, first chapter in your ninth standard, you have done RMM. So initial part is that only, beta. Okay. So therefore I have started with this topic because the concepts are very easy in the beginning, in the beginning. Ding ding. Are you writing? Yeah, sir. Yeah, very good. Chalo. Mihaika has joined now. मिहाइका आ गई क्या? अरे क्या हो गया? मिहाई का, where were you, man?
We have started with this chapter, beta. Yeah, Nihayka to sorry, sir, sorry. yeah, mole concept and stoichiometry. We have started with this chapter, beta. Atom, you know, na beta, H, O, and these are atom. If I take mass of an atom, it is known as relative atomic mass. Okay. Then mass of what is molecule union of atoms? We call it as RMM. Okay. Or molecular weight. O2. In nature, oxygen occur in the form of O2, H2, N2, Cl2. Okay. All these are the different. So mass of all of you copied this? Hello. Yes, sir. चलो बेटा अभी आ जाते हैं बेटा स्टार्ट करते हैं वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ atomicity. What do you mean by atomicity? Number of times an atom is repeated in a molecule. Now, if I write helium kabhi bhi nature mein it will be all alone. Helium, neon, argon. Okay, so they all are alone. So therefore, they are what? Monoatomic. Monoatomic. Monoatomic means atomicity will be how much? Monoatomic. So their atomicity, I'm writing here atomicity. So atomicity will be how much here? Atomicity 1. Then if I write, whenever in nature I write hydrogen, I write it as H2, okay, N2, chlorine, Cl2, okay, O2. So therefore they are what? Diatomic. So atomicity is 2. Then O3. O3 को क्या कहते हैं? Ozone. It is what? Ozone. I'll write the name also here. Ozone. Oxygen in the form of O3. It is what? Triatomic. So atomicity is 3. Then we have phosphorus, P4. Phosphorus exists as P4. It is tetraatomic. Then we have sulfur. Sulfur exists as S8. Octaatomic. 8. Copy this. Once you copy this, let me know. अनन्या मेहता भी आई है. Ananya Mehta, we have started with new chapter. Okay, sir. Which? Mole concept and stoichiometry. Mole concept. Okay, Oh, you have not missed much, beta. okay, okay. All of you copied this atomicity. Hello. Yes, sir. Done, all of you. Right. No, sir. Arey, No. what, man? Do it fast. Done? You say yes or no, man? What, man? Yes, sir. Okay, let us go to the next part. And the next part is what? This entire thing we have done in your ninth grade also. Okay, the next part is what? In exam, they will ask you to calculate RMM. What is RMM? Relative molecular mass. Relative molecular mass. Now, first example, if I'll give you, find, they will ask, they will give you, find RMM of carbon dioxide. Carbon dioxide. And in exam, they will give you these values. C is 12, O is 16. Now, beta, whenever they give this value, just write this value. Sometimes they may give carbon as 13. तो खुद से change मत करना. Because it is an isotope of carbon. So whatever value, because examiner wants to test your observation skill. So खुद से कोई change नहीं करने का. Whatever they are given, that will write. How to do this?
So first you should know the formula of carbon dioxide. What is the formula of carbon dioxide? Hello, CO2, right? Then we will find RMM. Now for finding RMM, what you are supposed to do? Ding ding, you tell me beta, which all different element you can see here? Hello. Ding ding सो गई क्या बे? अच्छा आन्या मेहता, you only tell me which all different element are here? अरे कोई तो बोलो. There's carbon and oxygen. So there is carbon and oxygen. How many times carbon is there? One. So 1 into carbon. How many times oxygen is there? 2. Two. And then you have to put plus sign here. Okay, then these values are given or not. Carbon value is 12. So what will do beta? 1 into 12. Oxygen is 2 into 16. So what you are going to write here? 12 plus 32. So what you are going to get? 44. AMU, atomic mass unit. Okay, copy this. Ding ding. What are you doing beta? गायब ही हो गई क्या डिंग डिंग? हाँ यार. क्या हो गया? डिंग डिंग का नाम क्या है बे? मेरे को तो नाम ही नहीं पता उसका. आन्या ढिंगरा. हाँ. कौन से बैच में? बैच 1 या बैच 2? Batch 2, sir. Okay, copied. Done, all of you. Hello. Come on, tell me. Yes, sir. Let us go to the next part. Now you have to be very careful if they ask you. Second question, find RMM of ammonium sulfate. And in exam, they will give you these values. What values they will give you? N is how much? 14. S is 32. H is 1. O is 16. Now, first of all, you should know the formula, right? Okay, Julka boy, what is the formula of ammonium? Ammonium का वैलेंसी कितना होता है बता? 1 plus 1. हाँ, पूरा फॉर्मूला बता. NH4 plus H4 plus 1. sulfate is how much? SO4 2 much. So valency will exchange. So what will get the formula? Therefore, answer करने से पहले what will be your formula? That's 4 twice SO4. Yeah, very good. NH4 twice SO4. Clear? This 4 बराबर नहीं दिख रहा है. Let me write this properly. Okay. Now what you will do? चलो बेटा. Therefore, RMM will be how you are going to do RMM. कितने अलग अलग एलिमेंट है जुल्का बॉय? Sir, nitrogen, नाइट्रोजन hydrogen, and sulfur, sulfur and oxygen. oxygen. How many times? Whenever there is this bracket, you have to be very careful. ये bracket है ना बेटा? Yes. तो नाइट्रोजन कितना है बाहर बोलो? 2. हाँ, so 2. Hydrogen, this will be what? 2 into 4. 8. Sulfur is 1. oxygen is. 4. So what you have to put? Plus, plus, plus. Okay. Ding ding कहाँ भाग गई थी रे बे? Now substitute these values. 14 plus 1. Then 16 and 32 और 32 and 16. ठीक है. ये अमोनियम सल्फेट कैसे बना समझ में आ गया ना बेटा? राइट. Yes. बस अभी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. दैट्स इट. कितना इजी है. 28 plus 8 plus 32 plus 64.
So you do it, you will get 132 AMU atomic mass unit. चलो copy this. दिविजा कहाँ गई थी बेटा? इतना लेट आए हो बेटा? सॉरी सर। बेटा हम लोग आरएमएम कर रही है, 9th का ही पार्ट है बेटा. वी हैव स्टार्टेड विद मोल कॉन्सेप्ट. ठीक है. ओके। दिस इज द बिगिनिंग. इन द 9th वी डिड इन द बिगिनिंग ना, द सेम थिंग इज देयर. चलो डन डन. रे डिंग डिंग, तू कहाँ भाग गई थी बे? सर डिस्कनेक्ट हो गया था। ओ हो, इतने टाइम तक डिस्कनेक्ट हो गया था. ये समझ में आ रहा है आरएमएम कैसे ढूंढने का? अरे बोलो ना. डन ऑल ऑफ यू. हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, now we go to the next part. चलो बेटा. Whenever बेटा water is there, let me write this. Water का कभी भी पूछेगा ना, थर्ड क्वेश्चन RMM of water. Why I'm explaining you this? RMM of water कभी भी याद रखने का. Water. It is very easy. Now you will write this. Oxygen. These values will be given. Answer. So what is the formula of water? H2O. H2. बस. फिर RMM कैसे होगा therefore? How many different element is there? H is there and O is there. How many times? This is 2 times. This is how much? 1. Plus H का वैल्यू कितना दिया है? How much they are given? 1. Oxygen is how much? 16. So what you are going to get? 18. Okay? Copy this. ये मैंने क्यों बताया? बिकॉज नेक्स्ट समय हम लोग करेंगे बेटा. आ जाओ. Done. युवान पाटिया, फोन तो नहीं देख रहा है ना? नहीं सर। चलो बेटा. डन ऑल ऑफ यू. एक मिनट। शनाया बेटा, आर यू देयर? हेलो. यस सर। हाँ. ओके. Shion beta, now you will do this. Chalo beta. I hope all of you copied this. Hello. यस Chalo. सर। Now the fourth one. This is we have done in your 9th grade also. Find RMM. Asher gang, come on. Blue vitriol. What is blue vitriol? Shion, कुछ पता है blue vitriol क्या होता था? Hydrated copper sulfate. अरे शियोन सो रहा है क्या बे? Is it CuSO4.5H2O? Yes, very good. And in exam, they will give you this value. Copper is 64. Very good, beta. Hydrogen is 1, oxygen is 16, and sulfur is 32. सानवी बेटा क्या है? सियोन सो रहा है क्या? पता नहीं, सो गया होगा। So, Shion. So, what is the formula first? Tell me. CuSO4.5H2O. Now, beta, whenever water is there, beta, we have studied water का weight कभी भी कितना होगा? Whenever water is there, then what will write? Come on, 18. So now, therefore, RMM I have to find. Now, let me tell you one thing. Whenever this dot is there, you have to add it separately. So now, which all element is there first? Tell me, copper. So I'll write copper. Then who is there? Sulfur. I'll write sulfur. Then there is what, beta? Oxygen. And this water I'll add separately. How many water are there, beta? 5 water. Okay, copper is 1, sulfur is 1, oxygen is 4, and then you put plus sign. Are you getting it? Hello. Suppose if it would have been 10H2O, then how many times water? Suppose if in any sum, beta, like suppose sodium carbonate, 10H2O if I would have given, then what will you write, beta? 10 into water separately. So 10 into water means 10 into 80. What is the weight of copper here? Sanvi, beta, what is the weight of the copper here given? 64। Substitute. Yes. Shion.
सियोन को उठा के आप शानवी, वाटर के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? अभी आया वो वापिस। वाटर के लिए व्हाट विल राइट बेटा? कम ऑन, वाटर इज हाउ मच? सानवी बेटा 18, दिस इज राइट। And what answer you'll going to get? 250. Atomic mass unit. AME means atomic mass unit. चलो कॉपी दे फास्ट। आप बोलोगे सर क्या ये पूरा नाइन्थ का ही पढ़ा रहे हो? हाँ, तो इनिशियल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज ऑफ योर नाइन्थ ग्रेड ओनली। ओके, Done, sir. डन 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 ऑल ऑफ यू। डन। Yes. Okay, let us go to the next part. Now the next part is, सबका हो गया क्या भाई? सब लोग बोलो भाई हाँ बे। Yes, Done, sir. sir. वेरी गुड, चलो। Yes, sir. Okay, now let us go to the next part. Come on. Okay, then we are going to do our next part. Next part is what? Remember, beta, we are done in your ninth grade percentage composition. Do you remember? Yes, sir. Right. Vinny beta, how to find percentage composition? Do you know the formula? Hello, Vinny. Percentage of any element is what? Atomicity of that element into what we do, atomicity into what? RAM of that element upon RMM means RMM of compound, entire compound. When I write RMM means entire compound only. Into what? 100. Copy this formula. Dun, dun, dun. चलो, डन 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 डन। विनी बेटा, आर यू देयर और गॉन? सियोन सो गया था क्या बे? Sir, I think he keeps getting disconnected from the. Oh my God. How come your connection is good and his is not? He has skill issues now. What do you- Oh my God. चलो बेटा आ जाओ बेटा, डन डन बोका, डन डन। Yes, sir. चल आ जा बेटा। नाउ बेटा इन एग्जाम आई विल टेल यू बेटा फाइंड दिस, आई विल गिव यू वन न्यूमेरिकल। चलो आ जाते हैं बेटा फटाफट। Dun, dun, okay. What is my sum? What is the sum? What is the sum? Percentage composition. Now, if in the sum, acha, in exam, if I have given you this sum, beta, look here. This is the sum. This is the end. Okay, this is the sum. Sanmukh beta, hello. हाँ सर. कैसे करेगा ये बता? So first we find Yeah, no, no, RMM no. and What is the then sum first? What is the sum? Numerical. I have given you this numerical. Find percentage of carbon and percentage of oxygen in carbon dioxide. So first beta we'll have to find RMM of entire compound or not. Compound कौन है? Carbon dioxide, yes. right? So first we'll calculate what? RMM. Of CO2. RMM will calculate. हमको कितना मिला RMM? 44. अच्छा, now what they have asked, percentage of carbon. कितनी बार कार्बन है अंदर बेटा? एटॉमिसिटी कितना है उसका? एक है. 1 into RM of carbon upon RMM of entire compound into 100. कितना सिंपल है? तो 1 into 12. RMM कितना है हम लोग को? 44. into 100. अच्छा, ऑक्सीजन का कैसे ढूंढेगा?
बस हमें 2 डालना है। हाँ या क्योंकि 2 एटॉमिक, ऑक्सीजन। हाँ, 2 2 into O upon CO 2 into 100. चलो कॉपी दिस. रिमेंबर बेटा, दिस वी आर डन इन 9th grade. यस सर। अर्णव, प्रीशा, शौर्य आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. भूटानी देव सो रहा है क्या? आवाज ही नहीं आई बेटा, क्या एकदम नींद में बोला? शयान शेट्टी आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। अरे क्या बात है एकदम. सारा बेटा. Yes, sir. ये कीरा करके कौन है, कीरा? क्या यार? मैं हूँ अद्वैत। ओके ओके ओके. अद्वैत बेटा आ रहा है ना ये? हाँ सर। अदिति भट्ट, आर यू गेटिंग इट डियर? Yes, yes, sir. फिशा, फिशा जैन. चलो डन ऑल ऑफ यू. Yes, sir. Sir, doubt है. बोलो. Sir, if this decimal is like coming in a very long, like बड़ा decimal आया तो उसको कितने तक? 0.2 तक, 0.2 डेसिमल तक ही करना है. 0.2 तक ही करना है, यहाँ पे 2 डेसिमल तक ही करना है. अच्छा बेटा, मैं आपको एक ये भी बता देता. जब दो ही एलिमेंट हो गए ना, तो एक का अच्छे से ढूंढने का, दूसरे का एक्टिंग करने का, ये फॉर्मूला लिखने का, फिर उसको 100 में से सब्ट्रैक्ट करने का. ठीक है ना? लेकिन अगर तूने पहला वाला ही रॉन्ग कर दिया रहेगा तो वो भी रॉन्ग हो जाएगा फिर. 2 डेसिमल तक ही करना है, अप टू 2 डेसिमल, ऐसा 2 डेसिमल तक ही करना है. डन ऑल ऑफ यू. हेलो. यस सर। चलो बेटा, अभी आ जाते आगे. शनाया बेटा, आर यू देयर डियर? हेलो. Yes, sir. ओके. शनाया बेटा, ये ना बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, द वन विच आई एम गोइंग टू डू. इन एग्जाम दे विल टेल यू, find percentage loss of water when blue vitriol is heated. Blue vitriol is heated. Either they will ask you percentage loss of water, or they will ask you percentage loss of mass. So how will you do this? First we'll have to find a, okay. Now what happens beta when I take blue vitriol, when I'm heating it? This is my next sum. So copper sulfate is the beta, this is blue vitriol. When you heat it, what will happen, dear? You know, this 5 water molecule, it will lose. So what is my loss of mass? This 5 water molecule will go na beta. Yeah, Shanaya beta, this loss water will go na, right? So I want to find percentage of water. How many water are here in this? Tell me, Shanaya. अरे बोलना बेटा. 5 water. So first we have to find RMM of entire compound or not. So we just calculated this or not. So first you copy till here. Then we'll find this percentage loss, percentage of water or percentage loss of water. Both I'll show you. First you copy this again. Write this reaction also. Blue vitriol, when it is heated, it gets converted into white anhydrous amorphous powder. युवान बेटा. हेलो युवान भाटिया. Yes, sir. हाँ समझा, लिख रहा है ना बराबर? हाँ, sir. So you have to write this. What is happening here? Tell me. ये लिखा, यहां तक कॉपी करो अच्छे से. युवान, you will tell me what will be my next step. सर किसका फाइंड आउट करना है? क्या लिखा है यहाँ पर? ये सम कॉपी करना है भाई. क्या बोला है? परसेंटेज नेक्स्ट का लॉस ऑफ वाटर या लॉस ऑफ मास. तो अभी किसका परसेंटेज तो ढूंढना पड़ेगा ना. तूने पहले आरएमएम कैलकुलेट कर दिया. यू हैव कैलकुलेटेड आरएमएम, देन व्हाट यू आर सपोज टू कैलकुलेट नाउ? अरे H2O का हाँ, कितना पानी है? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर? 5. 5. तो परसेंटेज अभी ढूंढना पड़ेगा कि नहीं, बोलो. हाँ.
Copied all of you till here. Hello. Yes, sir. Other. So now Yuan, what you will do, beta? Percentage loss of mass or water. The 5 water are there or not? So you at the top, what you'll write? Yuan, how many times water is there? 5 times or not? Tell me. Yes, sir, 5 times. Or upon RMM of entire compound into 100. Right? So RMM, how much you got? 250. Water mass is always 18. So how much answer you will get? 36%. Copy this. अभी बेटा नया पार्ट स्टार्ट होगा. So far whatever we have done, beta, we have studied in your 9th grade. Now we are going to start with the 10th part. But this all also thing they ask in exam. So therefore I have done this first. Okay. Now we are going to go for the newer part. So the very first thing is what we are going to study about. Chalo. First you copy this and then I'll start. So can you scroll up for a minute? I actually got disconnected. Oh my God. I'll reduce the size if possible. Yeah. So others can copy. Have you copied this, beta? Mridini, beta, are you getting it, dear? Hello. Sir, if we don't write the units like AMU for It's when okay. while It's okay. calculus. It's okay. Sorry. Here, they won't because here they are interested in percentage. Okay. Okay. Chalo, done. And take this percentage loss. Now we are going to go for the next part. And the very first thing is what? Now, beta, whatever we are going to study, this was not there in your, 9th grade. Okay. But this word was there, but there was no numerical based on it. So first we are going to do. Done all of you till here? 30, this percentage loss? I say yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Okay, now let us go to the next part. Okay, now what is their gram atom? So what is the formula of gram atom? You'll write this gram atom. Gram atom is what? Given mass of atom. Given mass of atom upon relative atomic mass. This is the formula. Gram atom. We have done this word, beta, remember? But here we'll do the numerical based on it. So whatever in numerical, what type of question will come, they will give you given mass and in bracket they will give you atomic mass. बस एक दूसरे से divide करना है. That's it. Copied the formula. Hello. Yes, sir. Chalo, let us go to the next part now. Sir, First one second. first sum I'm going to do. Are you all ready? Done? Yes, sir. Find number of gram atom in 8 gram of oxygen. So what is given here? Okay. Dave, beta, what is given? Tell me. Dave, Bhutani. Utre? Dave, you're not audible only, man. What, man? Mridini, you only tell me, beta, what you have to calculate? Gram atom. Okay. Have they given mass? How much is the given mass? 8 grams. So here at the top, what will write 8? What is the atomic mass they are given here? 16. So that's it. Dun. So 8 upon 16. We'll get 0.5 gram atom. Okay, copy this.
भूतानी उठ गया कि नहीं? Dian beta, are you there or not? Tell me hello. Yes, sir. Okay, so next we are going to do. First you'll copy this and then I'll go to the next part. Ding ding, तेरे को आ रहा है कि नहीं? Divija, ding ding, both of you are getting it or not? sir. It is very, very easy. चलो, done? Let us go to the next part. डन डन। ये ग्राम एटम हो गया। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? Dian, gram molecule. Dian, what you are going to study? Gram molecule. So what is the formula for gram molecule? Look here, I have written beta. What changes you'll do? Wherever there was word atom, there what we are going to use word molecule. So given mass of molecule upon RMM, relative molecular mass. Copy the formula. अरे एटम निकाल के मॉलिक्यूल डालने का, और आरएम के जगह पे क्या आएगा? आरएमएम। डन डन। So done. Okay. Now I'm going to give you some. Now, Dian, you are going to solve this. चलो आ जाओ. Okay. Find. Here, most of the students, they are going to go wrong. I know that. अरे यार, ये जा क्यों नहीं रहा है? हाँ. चलो. Dian बेटा, find gram molecule in 7 gram of nitrogen. And in bracket I have given n is equal to 14. What you will do, beta? Tell me. Sir, it's N2 na, because it's a molecule. So 2N. Yes, very good. यही मिस्टेक करते बच्चे। क्या करते पता है क्या? ये 7 है और ये 14 है, तो 7/14 करेंगे। नो, हियर व्हाट इज द टर्म यूज्ड? Molecule. So what was the formula for gram molecule? Gram molecule, what was the formula? First we have to write the formula. It is given mass of given अरे यार mass given mass सर आ सर 0.25 आ रहा है। एक नंबर। गिवन मास ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन आरएमएम। तो आरएमएम में खाली मैं एन लिखूंगा क्या? नो ना, आरएमएम में हम लोग क्या लिखते बोलो? N2. ये याद रखना बेटा। whenever in exam if they ask you gram molecule, if they use word oxygen, then what you are going to take it as O2. ओके, क्लोरीन अगर लिखा रहेगा तो डोंट टेक Cl, मॉलिक्यूल होगा ना। आरएमएम में भी ऑलवेज टेक मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन देन वी विल टेक इट एज व्हाट बेटा? N2। याद रखने का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है तो हम लोग N2 लेने का। तो आरएमएम हम लोग किसका ढूंढेंगे? आरएमएम ऑफ व्हाट? N2। समझा ना? तो गिवन मास इज हाउ मच? 7। N2 है ना बेटा। एक नाइट्रोजन का कितना है? 14। तो 2 का कितना होगा? N2 will become how much? Hello, this is N2 ना बेटा। 28. हाँ, तो 2 into 14 it will become. So I'll get what? 7/28. This I will cancel. I'll get 1/4.
1 by 4 is how much? 0.25 gram molecule. Have you understood? Don't do that mistake, beta. Because in gram atom, we are used to do that, right, beta? Okay. Copied this. Hello. Copy this. Chalo. Fatapat, fatapat. Once you are done, you let me know. Hello. Done, sir. Chalo, let us go to the next Sir, part. 1 minute, 1 minute. Oh my God, what happened? सारा बेटा आ रहा है, सारा का सारा आ रहा है. हाँ सर। वेरी नाइस. अर्णव शिंदे, ये तय बाला. चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी. डन 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 डन. नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट. डन डन. अरे हो गया क्या कॉपी? चलो मैं जा रहा हूँ आगे. नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट. एंड नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट? ये कौन बाहर चला गया? What man? Who left? Anyways, chalo. Now let us go to the next part. And the next part is what? अर्णव ही चला गया था. अर्णव बेटा. Okay. Next part is, you know, वेपर डेंसिटी. ये ऐसा आप लोगों ने कभी सुना नहीं था. वेपर डेंसिटी को हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं बेटा? वीडी. वीडी. वेपर डेंसिटी. वेपर डेंसिटी. ओके. नाउ वेपर डेंसिटी का और आरएमएम का एक रिलेशन होता है बेटा. आरएमएम इज व्हाट? RMM is 2 into vapor density. RMM is, अर्णव वापिस अंदर बाहर हो रहा है बेटा. RMM is 2 into vapor density. Copy this. Now you'll ask, sir, what is this vapor density? I'll explain. Don't worry. RMM is 2 into vapor density. Done done. I'll explain what is vapor density. Don't worry. First, you write this. Shall we go to the next part? Hello. Hello. Yes, sir. चलो. अर्णव बेटा है कि नहीं? चलो. अब इसमें सम कैसा आएगा? फर्स्ट सम इज फाइंड RMM इफ वेपर. सर या तो अंदर बाहर हो रहा है कब सर से? वेप. क्या आप पिछले वाला स्लाइड दिखा सकते हो सर? एक मिनट बेटा. क्या हो गया बेटा? किधर गया था तू? नहीं सर, वो कॉपी करने में टाइम लग गया. हाँ इतना सा छोटा सा था ओके. भाई. फाइंड RMM इफ वेपर डेंसिटी इज 30. चल अभी तू ही बता, भौमिक कैसे करेगा? 60 होगा ना आंसर? हाँ, तो फॉर्मूला पहले लिखना पड़ेगा कि नहीं? हाँ. RMM इज 2 into वेपर डेंसिटी. VD भी लिखते हैं, VD वेपर डेंसिटी. सो 2 into 30. सो how much I'll get? 60. Copy this. Sometimes they will give you RMM and they will tell you to find vapor density. So vapor density will be what? RMM upon 2. Okay? Yes, sir. Chalo. Done, done, done. Have to write atomic mass unit for this. Yeah, you can write, or you can write in gram, whatever. AMU. Sir, writing units is compulsory. No, beta, they will mention in exam in gram. They will tell you RMM in gram, right? Yeah. Okay.
Copied all of you. Hello. Yes, sir. Chalo. Now, beta, I'll explain you what is vapor density. And you'll have to write this, beta. What is vapor density? Dun, dun, dun. Vapor density. किधर गया भाई vapor density आजा. Yeah, here it is. This is very, very important. Dun, dun, dun. All of you. सब मैं छुपा देता हूँ खाली आपको इतना याद रखना. This first is definition, beta. Here, till here. What is vapor density? Vapor density is the ratio of mass of certain volume of gas or vapor to the mass of same volume of hydrogen. And volume must be measured under same condition of temperature and pressure. I'll explain this. Suppose beta this is my container. इसमें सबसे पहले मैंने क्या भरा? Unknown gas भरा. I filled it with what? Unknown gas. And then I calculated the weight of it on putting in weighing pen. Then I removed this unknown gas. Acha, is my volume changing? No. Now I'll put what? Hydrogen gas. Suppose मैंने पहले unknown का निकाला. Unknown का value मुझे आया X. Then I filled what? Hydrogen gas. I removed that unknown gas and then I filled what? Hydrogen gas. I got answer for this, let us say Y. Now how to find vapor density? तो अननोन का वेट कितना आया था इन सेम कंटेनर x, हाइड्रोजन का कितना आया y, तो x by y. Clear? So look, I have written here formula also. What is the formula? Vapor density is mass of certain volume of gas upon mass of same volume of hydrogen. Copy this definition and the formula. अरे कंटेनर लेने का, कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स ही रहेगा, उसके अंदर पहले अननोन भरने का, उसका वेट निकालने का, फिर उसको निकाल देने का, देन उसके अंदर क्या भरने का? हाइड्रोजन भरने का, उसका वेट निकालने का, फिर अननोन अपॉन हाइड्रोजन का वेट को डिवाइड करने का. क्लियर? डन 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 डन. Yes, sir. If all of you are done, kindly let me know. So I'm not able to understand vapor density. Okay, beta, it is very simple thing. I have taken a container. In this first, I will fill one gas. Suppose I have filled oxygen gas. Then I have to calculate the weight of it. सर लिखना है ये सब. हाँ, तो ये पूरा लिखना है डब्बा. Shruti beta, first I Okay. filled here in this oxygen gas. I'll calculate the weight of this. I remove this gas. Then I fill what beta? Hydrogen in it. Right? Yeah. And I'll find the weight of hydrogen by putting on weighing pen. Okay, sir. Thank Now you. earlier, suppose I have filled oxygen in it. My answer was coming, let us say on weighing pen, I got 20. And then I filled hydrogen in the same vessel. Okay, let us say I got answer for that 10. Then what is the formula? Weight of unknown upon weight of hydrogen. So for oxygen, what I was getting answer? 20. For hydrogen, I was getting 10. So 20 by 10. So answer will be 2. Are you getting it now? Yes, sir. Thank you. I'll give you one numerical also. Don't worry. Copied all of you? Yes, This sir. is the main formula. This formula you should know. Vapor density is mass of certain volume of gas upon mass of same volume of hydrogen. Dun 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 dun. Yeah, Ashleisha, tell me, dear, what happened? So why is it only hydrogen? Because whenever we are calculating this, hydrogen is our standard reference. Remember, beta, whenever atomic weight we took for first time, we took what? Hydrogen atomic weight as 1 because it is standard. That is why we always relate it to hydrogen because it is a standard unit. Okay, thank you. Okay? Chalo, I hope all of you have copied this.
हेलो। Yes. Yes, sir. चलो, now we go to the next part. One numerical I am going to. Shruti beta, where are you, Shruti? Yes, sir. So you will help me to solve this numerical. Shruti, what is given here? Tell me. We This have seventh numerical you will all copy first. And Shruti will read it. What is written first? a gas cylinder filled with hydrogen holds 50 gram of the gas. Wait. I filled this cylinder. In this first I put hydrogen. I calculated the weight. How much weight I got? 50 50. grams. Then I removed that hydrogen. Then same cylinder holds how much? 200 grams of a gas A. So what I did, I removed hydrogen and then I added which gas? Gas A, and I weighed. So what was the weight of that unknown gas A? 200 grams. Then I removed this A gas and then I added which gas? Gas B of 500 grams. So gas B ka weight was how much? 500 grams. And everything they mentioned under same condition of temperature and pressure. And what they told you to calculate? The RMM of Of- gas A and B. तो बेटा आरएमएम का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? अभी इसमें तुझे कुछ नहीं पता है तो तेरे को, लेकिन ये दिया है ना अननोन और हाइड्रोजन. सो वे कैन व्हाट आई कैन कैलकुलेट फर्स्ट? टेल मी डियर. कैन आई कैलकुलेट वेपर डेंसिटी? श्रुति, टेल मी. Yes, sir. Vapor density of gas A. Tell me, beta, how will you calculate vapor density of gas A? What was the formula? Sir, mass of the gas upon mass of hydrogen. Mass of certain volume of gas A upon Shruti. What I'm going to do now? Mass of same volume of gas. Mass of same volume of hydrogen. Very good. सर तो 200 अपॉन 50 हो जाएगा. तो गैस ए में, तो गैस ए का वेट कितना है श्रुति? हाउ मच इट इज? 200. एंड सेम वॉल्यूम ऑफ सेम हाइड्रोजन का कितना था? 50. Yes. So what answer I'm going to get? 4. Now I can calculate, therefore RMM of gas A I can now calculate. What was the formula for RMM, beta? Vapor density is how much? RMM is how much? Vapor density into 2. So 2 into vapor density. So 2 into how much? 4. 8. 8 grams. Why gram we'll use? Because here everything was given in grams. Okay, Shruti, how to use the unit? So we have done only first part. देव भूतानी ठेगा ही नहीं वो. शौर्य किधर गया? शौर्य. हाँ सर. अभी ये पूरा कॉपी कर ले, फिर किसका करना है अपने को? और एक चीज पूछा है. व्हाट दे हैव टोल्ड अस टू कैलकुलेट? बोलना हीरो माई मेरे. गैस ए का हम लोग ने ढूंढा ना. हेलो शौर्य बेटा. हेलो हेलो. अभी हम लोग को किसका ढूंढने का है? देखना भाई, यहाँ पर क्या लिखा है? गैस बी का भी ढूंढने गैस का है बी कि का. नहीं? तो अभी पहला इतना कॉपी हो गया क्या सबका क्वेश्चन के साथ? सर मैंने बी का भी निकाल दिया. बहुत अच्छी बात है बेटा, आंखों में आंसू आ गए. वेरी नाइस. लेकिन सबका हो गया पहला गैस ए का? हाँ सर. Yes, sir. तो अभी बेटा शौर्य, व्हाट यू विल टेल? अपने को अभी गैस बी का ढूंढना है, तो मैं गैस ए की जगह पे क्या लिखूंगा? बोलो ना. गैस बी. गैस बी. तो गैस बी का कितना वेट है बोलो? 500.
कितना था 500, तो 500 हाइड्रोजन का तो 50 है ना, तो कितना आएगा 500 अपॉन 50? 10, तो यहाँ पे क्या होगा 2 into 10, सो आंसर क्या होगा? 20, 21. यस, वेरी गुड, कॉपी दिस नाउ, दिस वाज अवर पार्ट 2। इजी। यस सर। सर आपका रीजनिंग क्या था उधर एंड में भी ग्राम्स लिखने का? अरे बेटा यहाँ पे सब ग्राम में दिया है ना वेट, देखो ना, एवरीथिंग इज गिवन इन ग्राम्स और नॉट, टेल मी डियर। यस सर, गॉट इट, थैंक यू। या डियर। So these kinds of questions will come for 3 marks or? नहीं बेटा, दिस कम फॉर 2 marks। ओके, अरे Okay. इजी है, पहली बार कर रहा है, इसके लिए तेरे को कितना इजी था बता मुझे। नहीं मैं बस पूछ रहा था कितने मार्क्स के आएंगे। 2 marks। ओके। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग करेंगे, आ जाते हैं। मैंने बोला था ना आई लीव यू ऑल अर्ली, हाँ बेटा 10:30 आई लीव यू ऑल, डोंट वरी। डन डन। यस सर। सबको कॉपी करने दे रहे भाई, तू ही करेगा क्या कॉपी? मी हाय आई का। डन डन। यस सर। दिविजा बेटा डन बेटा, ऑल ऑफ यू। चलो यस बेटा, नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर, शैल आई इरेज दिस नाउ, टेल मी हेलो। Yeah. Look beta, mole concept beta, we if you'll write then only you'll understand. Okay, now we go to the next part, and that is heading will be relationship between molecular formula. Hey beta, whenever I write molecular formula, what form I'll use? I'll write MF. And empirical formula. Empirical formula. Empirical formula is EF. Okay. Then. Give this heading. अभी आप बोलोगे सर व्हाट इज एम्पेरिकल, अरे बताएगा बेटा, पेशेंस, शांति, शांति। ओके, डन। हेलो। प्रिशा इंगुली। हेलो प्रिशा। Yes, sir. Oh yeah, how are you, dear? So we are going to do this now, beta. I'll tell you, beta. You have studied something about first example. I'm going to take, beta. You know, beta, there was a compound we did, benzene. Do you know, beta, benzene? Where we did what was the molecular formula for benzene? भूल गए बेटा? You forgot. Benzene was C6H6. अच्छा, remember बेटा, that was the only closed compound we studied ऐसा hexagon बनाने का बेटा। फिर क्या लिखने का? अल्टरनेट, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल। Carbon can form how many bonds? 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. In exam, they ask, beta, the structure of benzene. Everywhere you'll put HHH. Prisha, beta, how many carbon are here in this? Tell me. 6. How many hydrogen? 6. Therefore, the molecular formula is C6H6. Clear? Yes. Okay. Now, how many different atoms are in this? Tell me, beta. Carbon is there and hydrogen.
Now you have to take ratio of this. How many carbon are here, beta? Tell me. 6. And this is also how much? 6. So 6 is there. So if you take ratio, this will get cancelled. This will get cancelled. And what I'll get? Final answer? 1:1. Very good. So therefore, my empirical formula will be how many C I got finally? 1. H also 1. So this is my empirical formula. So how I got empirical formula now? Tell me what I did first. This was my molecular formula. How to find empirical formula? We took what? Ratio of all the different atoms in a molecule, right? So what is empirical formula? It is the simplest whole number ratio of different element present in a molecule. Is this clear? Right, Prisha? Hello. Yes, sir. Okay, copy this. Only for benzene we are going to draw. I have drawn this. For others, I am not going to draw. Chalo. Done, 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 done. Hello. I am going to give many example. Don't worry. Meher, beta, are you getting it, dear? Hello. Yes, sir. Chalo, Aditi, beta, are you ready? Hello. Yes, sir. Copied? All of you? Yes, sir. Chalo, next example. And Aditi, beta, I'm giving you next example. Example number 2. I have given you, wait. I given you butane. Do you remember, beta, butane we have done in organic chemistry? What is the molecular? I'm writing short form. Molecular formula was what? C4H10. Now, Aditi, what will do, beta? Which all different element are there? Carbon and Carbon and hydrogen. what is the ratio? How many carbon? 4. How many hydrogen? 10. So what I'll get? Come on. 2 के टेबल में दोनों डिवाइड हो रहा है कि नहीं? So 2 2s are and 2 5s are. So therefore, what will be my empirical formula now? What will be my empirical formula? Very good. अरे बोलना कार्बन कितना है बेटा? C2H5. C2H कितना आया? 5. Understood बेटा? Yes, sir. ले लो. This was my molecular formula and this is my. So how to find empirical formula? You have to take simplest whole number ratio of different elements. Clear? Hello. Yes, sir. Chalo. Copy this. त्विषा आवाज आ रही है कि नहीं? हेलो. Done, sir. Okay, Ashlisha. Third example. sir. Are you ready for the third example? Yes. Okay, the third example I am going to give you glucose biscuit. Glucose. What is the molecular formula for glucose, beta? पढ़ा है कभी नहीं? C6H12O6. C6H12. Very good. What are the different element now? Carbon, hydrogen, and oxygen. So how many carbon? 6. Then you have to 6 के टेबल में 1:2, 2:1. Then what you are going to write? Therefore, what will be your empirical formula now? CH2O. Carbon 1 है. H कितना मिला मुझे? 2. O is how much? 1. Okay, very good. Very nice.
ये क्या है? वेटिंग रूम में पार्टिसिपेंट कौन है भाई? वेरी गुड. कॉपी दिस. इजी है ना एम्पेरिकल फॉर्मूला? कितना चिंदी था बेटा. हाँ. व्हाट हैपेंड? यू नॉट गेटिंग? हाँ सर, आ रहा है कि नहीं? आ रहा है, क्यों, क्या हुआ? ओके, बस ऐसे पूछ रहा हूँ भाई. चलो, डन डन. नेक्स्ट एग्जांपल. शायान शेट्टी, आर यू रेडी? यस सर। ओ हो. एक मिनट. क्या है? चाय? हाँ. अरे क्या है साथ में? ओ, ओरियो बिस्किट. ओके. ठीक है, कीप इट देयर. या शायन बेटा, वेर आर यू? हेलो. राइट यार। अच्छा. अरे, ओरियो बिस्किट आ गया है बेटा. ओके ओके. सर। चलो बेटा, चाय के साथ में ओरियो बिस्किट यार. फोर्थ बेटा, हाँ चलो. एसिटिक एसिड नाम सुना है बेटा? शायन शेट्टी. हाँ सर, हाँ आया है 2-3 बार। हाँ, इसको पता है हम लोग क्या बोलते थे? निग्गा, हाँ विनेगा. याद आ रहा है कि नहीं? हाँ, याद आ रहा है, कॉमन बहुत नेम. याद आ रहा है। इसका और एक आईयूपीएसी नेम क्या था, याद आ रहा है? हाँ हाँ सर। इथेनॉइक एसिड. चल, अभी यस तू मेरे को सर। बता, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता था एसिटिक एसिड का? छत्रीकू. भूल गया क्या? नहीं नहीं, याद है। हाँ. कितना है कार्बन इसमें, बता बेटा. पहले ऐसे बोल. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नहीं? और सी कितना है बोल बेटा? 2 ना? 2, एच कितना टोटल? 3+1. 4, ओ ओ. C2। हाँ, अभी ना आई वांट टू फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला. सो हाउ मेनी डिफरेंट एलिमेंट आर देयर? 3 different elements। टेक द रेशियो. हाउ मेनी कार्बन? 2, हाउ मेनी हाइड्रोजन? 4, हाउ मेनी? 2, So what I'll get? 1:2:1। Therefore, what is the empirical formula for acetic acid? that। What? हाँ, CvH2NO. हाँ। Copy this. It झुमका is भाई. the same as glucose only, right? It's okay, beta. Many element can have same empirical formula because we take ratio, na dear? Yeah, okay. Oh yeah, yeah. Copy, copy, copy. Copy, copy, copy. डन सर। सबको करने दे रहे भाई, झुलका बॉय. तू ही शाना बनेगा क्या? दिविजा बेटा, तू बाहर चली गई थी, आ रहा है अभी? तेरे कुछ मिस तो नहीं किया ना? दिविजा. Yes, sir. डिड यू मिस एनीथिंग? नो ना? No. लोग खाली तेरे को ऐसे मैं बता देता हूँ. यू वर आउट फॉर आई थिंक 1 मिनट, आई गेस. लुक बेटा, वी डिड ग्लूकोज. बिफोर दैट वी डिड ब्यूटेन. एंड देन वी डिड बेटा इसके पहले बेंजीन. आई होप यू हैव कॉपीड ऑल दिस बेटा. Yes. ओके, चलो. सो वी डिड फॉर एसिटिक एसिड, विनेगर एंड इथेनॉइक एसिड. ओके. Anya Mehta, are you there, dear? Hello. Yes, sir. Yeah. So, are you ready for the next one, dear? Yeah. Okay. I'm going to give you now fifth one, that is water. Water, what is the formula, dear, for water? H2O, Yeah, very good. H2O. So, which all different element are here? hydrogen and oxygen. What will be the ratio, dear? 2:1. Oh my God. So, is this going to get cancelled? No. No. So, my empirical formula will be what? 2. H2O. So it can be, remember beta, if any element, if they are not able to cancel in their ratio, then molecular formula and empirical formula can be same. Shruti beta, Okay, समझा sir. ना? Sometimes molecular formula and empirical formula can be same also. Yes, sir. Okay, very good. Copy this. लेकिन now you will ask, sir, आपने स्टार्टिंग में एक हेडिंग लिखा था, what is the relationship only meant? Okay. Chalo, so let us do the relationship now. First you copy this and then I'm going to go to the next part.
Okay. I hope all of you have copied this bit. Tune. Chalo. What is my heading now? देव भूतानी. अरे तू बोल ही नहीं रहा है भूतानी. स्पेलिंग भी मेरा रॉन्ग है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला is equal to, and here I got Empirical formula. Empirical for टेन टेन. आप बोलोगे सर कुछ मिसिंग है वहां पे. हाँ वो मिसिंग ही है, पर्पसली मैंने रखा है. डोंट कॉपी दिस. फर्स्ट यू पे अटेंशन हियर. अच्छा, विच एग्जांपल वी डिड टुडे फर्स्ट. माइक इज नॉट वर्किंग मैन. चलो आ जाओ तो. बेंजीन. हाँ, फर्स्ट एग्जांपल आज हम लोग ने क्या किया था? बोलो बेटा. बेंजीन. वेरी गुड. बेंजीन में क्या था? वी डिड एग्जांपल ऑफ बेंजीन. याद आ रहा है कि नहीं? बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था? बोलो. C6H6. और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था? बताओ मुझे. पीएच. पीएच. अरे देखो, आज हम लोग ने सबसे पहले क्या किया था? देखो ना. बेंजीन C6H6 था और ये CH था. वो मैंने लिख लिया वहां पे. देन वी डिड ब्यूटेन. ब्यूटेन का क्या था? बोलो बेटा. C4H10. वेरी गुड. सेकेंड एग्जाम्पल वी डिड टुडे वाज C4H10. ये खाली तुम्हारे एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ. एंड दैट फॉर्मूला वाज C2. एम्पेरिकल फॉर्मूला C2H5 था. थर्ड वी डिड ग्लूकोज बिस्कुट. ग्लूकोज में मुझे क्या मिला था बेटा? CH2O. देन बेटा वी डिड एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड किया था ना, C2H4O2. याद आ रहा है कि नहीं? तो मुझे कितना मिला था? लास्ट में आज हम लोग ने क्या किया था? बोलो. ओके. नाउ Mihaika, are you there beta? Hello. That's true. Yeah. Now what you are going to do here? Tell me beta. First में how which by which number you will multiply? I want this to be same. These two. तो कौन सा नंबर से तू मल्टीप्लाई करेगी बेटा? 1/6. हाँ, फर्स्ट वाले को 6 से मल्टीप्लाई करेगी. सेकेंड वन को. How multiply? अच्छा, okay, yeah. अरे बेटा लुक ना. हाँ, yeah, got it, got it. I want to convert this into this. Yeah, I got it, sir, got I it. want to make CH को C2H6. So Yeah. how I'm going to do? Multiply by which number? Multiply by 6, yeah. Very good. C2H5 or C4H10 को I want to make this left hand side Multiply by equal to 2. multiply by 2. I want to make this left hand side and right hand side both same. Multiply by 6. Very good. I want to make this two same. Into 2. Very good. I want to make these two same. Into 1. Acha beta, can you see you are getting certain numbers here? Yeah. Yeah. So are these number fixed? No, no beta, they may change, na beta. So if I want to convert molecular formula and empirical formula and multiply by certain number, and that number keeps on changing, and that number is, we write it as n. What we write it as? N. And And it will be always a whole number. Your this n is always what beta? Whole number or not? Tell me. yes. 6, 2, 1, 3, 4 कुछ भी हो सकता है. Now you copy the, I wanted to explain you this, how you got this molecular formula is equal to n and empirical formula. Clear? So then मतलब n is a whole number, that तो is clear, but then what is n मतलब? n is the simple. वो भी मैं बताता बेटा. वो भी मैं बताता ना बेटा. पहला इतना पे कर ले. Okay. ओके. सब लोग ने कॉपी कर लिया ये? Yes.
डन। ओके। ओ रियो या, अरे बोलो ना यस और नो यार, बच्चे लोग जल्दी जल्दी बोलो। यस सर। Yes, sir. ओके चलो, डन 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 डन। नाउ बेटा अभी अभी एन क्या है वो भी मैं बताता हूँ। अभी आपको ना बेटा, मैं हम लोग ने देखो क्या क्या पढ़ा पहले, सुन लो। फर्स्ट फर्स्ट आज हम लोग ने पहला फॉर्मूला क्या पढ़ा बोलो बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू व्हाट? एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, एन इंटू। सेकेंड, अभी जो लोग बहुत लोग पूछ रहे थे ना, झुलका भाव एन क्या होता है बेटा? एन इज आर एम एम, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। क्या होता है बोलो बेटा? जैसे आरएमएम का मॉलिक्यूलर मास से आरएमएम मिलता था, वैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला से क्या मिलेगा? अरे मैम। हाँ नहीं, एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास निकालूंगा तो उसको मैं क्या कहूंगा? एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। आई विल प्रूव दिस एंड शो यू, डोंट वरी। ओके। देन थर्ड, आज हम लोग ने और एक चीज पढ़ा था। आरएमएम के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो बेटा? 2 into वेपर डेंसिटी और नॉट, टेल मी। अरे वी डिड दिस और नॉट, वेपर डेंसिटी। अच्छा, सो दिस इज माय इक्वेशन, दिस वाज माय इक्वेशन। अच्छा, कैन आई सब्स्टिट्यूट दिस 2 in 1? तो व्हाट आई विल गेट? Instead of RMM now I can write 2 into vapor density or not? Therefore N will be what? Upon empirical formula mass. I'll prove this, don't worry. How I got this last equation from 2 and 3. So we have done today how many formula? First is this. I am related, and we are going to use this formula next time for solving numerical, but before this I'll prove this. चलो कॉपी ये 4। एक झुलका ये एन कैसे ढूंढने का वो मैं बताता हूं, देख। यस सर। मेहर बेटा, युवान भाटिया, अदिति, ऑल ऑफ यू, शयान, दियान, सारा, अर्नव, आत्मदीप, दिविजा, आर यू गेटिंग इट? डिंग डिंग। अरे Yes, बोलो। sir. Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। डन ऑल ऑफ यू? चल जल्दी जल्दी, 5 मिनट बाकी है, चलो जल्दी जल्दी। डन डन। Yes, sir. चलो बेटा आ जाते। अभी देखो मैं तुमको प्रूव करके बताता हूँ। एक एग्जांपल लेते, छोटा सा एग्जांपल लेके मैं प्रूव करके बताऊँ क्या? बोलो। चला जाओ। ए अर्जुन, चल तू ही बता, अभी तेरे को डाउट था ना पहले। चल, मैंने एक एग्जांपल लिया, ये आपको एग्जाम में कोई पूछेगा ना, दे नो, डोंट कॉपी एनीथिंग नाउ। ओके, डोंट कॉपी एनीथिंग नाउ। अर्जुन, आई गिव यू एग्जांपल ऑफ इथेन। चल, इथेन का क्या फॉर्मूला था बता बेटा? सर C2H6। हाँ, तो इथेन हम लोग लेते, इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बोल बेटा? H6। C2H6। ओके, तो इसका भी मैं आरएमएम ढूंढ सकता हूँ कि नहीं? यस सर। आरएमएम क्या हो जाएगा बोलो बेटा? कार्बन कार्बन प्लस 6 हाइड्रोजन। 6 हाइड्रोजन। तो 2 कार्बन का कितना होता था बेटा? 12 + 6, 24 + 6 30। 30 आ गया। अच्छा, अभी तू मेरे को बता, इथेन का एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोल? एम्पेरिकल फॉर्मूला और सी सी एफ लिखा। सी, CH। रेशियो ले लेना, C/H। हाँ मतलब कितना हो जाएगा? 2:6। 2:6, तो कितना हो जाएगा? 1:3। और CH। देयरफॉर क्या मिल गया? CH3 मिल गया कि नहीं? यस सर। तो अभी जैसे आरएमएम में तूने ये पूरे का मास डाला था, देयरफॉर एम्पेरिकल फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा बोल? कितना कार्बन है? 1 × C हाँ, प्लस 3H।
No need to copy this, huh? So what you'll get 12 plus 3, 15. 50. तुझे क्या क्या मिल गया बोल? Molecular formula, RMM एंड EFM मिल गया कि नहीं? yes, EF भी मिल गया, मॉलिकुलर फॉर्मूला भी पता है और एम्पेरिकल फॉर्मूला भी पता है। अभी तू एन ढूंढ सकता है। एन का क्या फॉर्मूला हम लोग ने यूज किया था आज? एन का ये देख। 2 into नहीं, VD. एन 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 हाँ, एन। okay. RMM upon empirical formula mass. हाँ, तो एन ढूंढ लेते बेटा। एन देयरफॉर एन कितना हो जाएगा? RMM अपॉन Empirical एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। RMM कितना मिला था हम लोग को? 30, 30। ये कितना मिला था? 15, तो कितना मिला? 2, हाँ, एन का वैल्यू कितना आया बोल? 2, अच्छा, अभी आज हम लोग का पहला ही फॉर्मूला पढ़। मॉलिकुलर फॉर्मूला इज व्हाट? 2 into empirical. एन इंटू हाँ, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो अभी मैं डायरेक्ट अभी लास्ट पर, देयरफॉर मॉलिकुलर फॉर्मूला इज व्हाट? N into 2 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिकुलर फॉर्मूला मुझे यहाँ पे कितना मिला है बोलो बेटा? यहाँ पर C2H6, यहाँ पे मैंने C2H6 लिख दिया। एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना मिला यहाँ पर? PS3, एन का वैल्यू, अरे यार ये एन एन लिखने का था मुझे। एन का वैल्यू कितना है बोलो बेटा? एन का वैल्यू। 2, अच्छा, अभी एक काम कर, ये C2H6 ही है। अच्छा, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर। 2 इंटू सी विल बी व्हाट? C2 and H into 3 was H6। तो देख, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हुआ कि नहीं बोलो? yes sir. तो अभी एन क्या होता है वो समझा क्या? हाँ sir. ये एग्जाम्पल से पूरा सब बता दिया तुमको। Okay. ये देख, ये फॉर्मूला भी तेरे को बता दिया। राइट ना बेटा? राइट? Yes ऑल sir. ऑफ यू, आर यू ऑल गेटिंग इट? हेलो? Yes, sir. पक्का? अरे बोलो ना। Yes sir. ओके, अच्छा, पक्का ना बेटा? सबको आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी बोलो? No, sir. Okay. Yes, sir. Now, beta, numericals of molecular formula and empirical formula I'm not going to do today. Okay. So that we'll do in the next class. अच्छा, मेरे को बताओ, तुम्हारा नेक्स्ट मंडे आई थिंक बहुत इजी पेपर है ना कोई तो? नेक्स्ट मंडे विच पेपर इज देयर? Graded Hindi, graded Marathi. हाँ हाँ, तो फिर बाद में नेक्स्ट संडे आई विल टेक ऑफलाइन क्लास, ऐसा मैं करूँगा फिर, ठीक है ना? ओके। खाली आज वो फिजिक्स था इसके लिए मैं तुम्हारा ऐसा रखा। चलो देन, एनी डिफिकल्टी डिलियर? No sir. बाय एवरीबॉडी, ऑल द Sir, बेस्ट फॉर टुमारो। तो सुनो ना बोलो। सर, मेरा आप लाइक HCl करा सकते हो ये हफ्ते में? तू ये, तेरे को कितनी टाइम से बोल रहा हो? तेरे को बहुत बार मैसेज डाला, तू मेरे को बता, कभी आज ही कर देते। आज रात को फ्री है? सर अभी कल तो स्कूल है एंड एवरीथिंग। अरे बाबा यार, ऐसा मत कर। तू फिर टाइम बताएगा तो मैं करूँगा। सर इवनिंग में चलेगा आपको? इवनिंग में कितने बजे फ्री होगा तू? सर 6 बजे। हाँ, तो मैं तेरे को आज मैसेज करता हूँ, रुक जा, मैं मेरा स्केड्यूल देख के करता हूँ, ठीक है? चलो देन, बाय बाय। बाय सर।